Hello, hi, good evening, everyone. How are you all? Quick check. Yes, I am live. हो गया. Some problem क्या? Hello, hi, good evening, everyone. Hello. So in this session, we are going to discuss all the important current affairs aspect uh, of things that happened in the month of October, and this is part six of the series. Right. And let me welcome all of you. Wish you all a very good evening. And आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द सिक्स्थ पार्ट टू ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दैट इज हैपेंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. माय नेम इज वैभव प्रकाश और जस्ट अ सेकंड, ये क्या हो गया? Yeah, sorry. Yeah. So my name is Vaibhav Prakash. I'm a National Law University Ranchi alumnus, and I have been training students since my final year of law school. And by now, I have successfully trained more than 2,000 plus students for various competitive law entrance examination. Just a second, I'll post a quick reminder, and thereafter we'll start. Yeah. So, yes, my name is Vaibhav Prakash. I'm a National Law University Ranchi alumnus, 2011-2016 batch. I started training students while I was in my final year of law school, also pursuing my master's in law in criminal and securities law this year. And at Unacademy, you can find me taking classes on law, GK current affairs, uh, English, and critical reasoning as well. तो आप मेरी क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हो. इफ़ यू हैव नॉट जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप and the telegram channel, I would highly encourage you to do that. You can find the link of the same in the description of this video. यहाँ पे मैं अपने डेली स्केड्यूल जो होती है क्लासेस की वो मैं पोस्ट कर देता हूँ. तो आपको वहाँ पे क्लास का टॉपिक नेम, टाइमिंग एंड क्लास लिंक तीनों जो है वो मिल जाता है. राइट. Before we go ahead, let me actually tell you certain things about the Plus subscription that Unacademy has to offer. The best advantage that Unacademy gives to you is that you have the flexible plan of choosing for how long do you want your preparation to continue. So, like for example, if you're targeting CLAT 2022, which is 6 months from now, you can choose a 6 month program. And when you do that, you can also use my referral code to get an additional 10% डिस्काउंट. आप ये 10% डिस्काउंट लेके ओवरऑल कोर्स फी पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. क्यों चूज करना चाहिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन? कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस मॉक्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट, वीकली टेस्ट, अपडेट्स, मॉक टेस्ट, नेशनल लेवल, सब कुछ जो है वो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है. यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ रेजिंग योर हैंड्स एंड asking your doubts live during the class while talking to the educator. This is very important announcement जहाँ पे कि I'll take some time to help you understand what Unacademy has brought for you. Now, for everyone who's appearing for CLAT 2022, there's a mock test that has been scheduled for 27th of November, Saturday को. Coming Saturday, 27th November को एक mock test है. This is also, it's a full-length mock test for CLAT entrance examination. 150 questions होंगे, 120 minutes का होगा, जैसा कि एक proper CLAT का एग्जाम होता है. ना यहाँ पे there are so many rewards that you can win. So rank 1 अगर आपका आता है या rank 2 या rank 3 आता है, so apart from the scholarship that you get at Unacademy
प्लस सब्सक्रिप्शंस, जहाँ पे कि रैंक 1 को 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, रैंक 2 और 3 को 50% स्कॉलरशिप मिल रही है, यू ऑल्सो हैव अ चांस ऑफ विनिंग 5,000, 3,000 एंड 2,000 रुपीज वर्थ Amazon वाउचर्स। तो आपको Amazon वाउचर जो है वो भी मिलता है अगर आप रैंक 1 2 3 आते हो, एंड रैंक 4 to 10 में आपको Amazon वाउचर वर्थ 500 मिलता है, प्लस अ 10% स्कॉलरशिप मिलती है आपको ऑन द ओवरऑल कोर्स फी। So all of these are something which you can win if you appear for this Unacademy mock test for CLAT 2022 on 27th of November, which is a Saturday. Save the date, save the time. Don't forget to write this. It's a free mock. You will at least get to know where you stand. आपको अपनी preparation किस stage पे है, कहाँ पे है, आपको उसके बारे में definitely पता चलेगा. There's also a 30-day crash course batch that Unacademy has started for LSAT, क्योंकि LSAT जो है वो दिसंबर में ही होने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो स्टार्टिंग 26 नवंबर एक 30-day क्रैश कोर्स बैच है LSAT के लिए, विच यू कैन ज्वाइन आफ्टर टेकिंग अ प्लस सब्सक्रिप्शन। सेम वे आप 6 मंथ का क्लैट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कर सकते हो एक्सेल लॉ करके, जो कि 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और गैवल मेकर्स 2023 स्टूडेंट्स के लिए जो कि 26 से है, विच इज़ अ 1 year बैच फॉर क्लैट 23 एस्पिरेंट्स, बिकॉज क्लैट 2023 जो है वो दिसंबर ऑफ 2023 में ही हो, सॉरी दिसंबर 2022 में हो जाएगा। ठीक है, लाइव क्विज फीचर्स जो है आपके पास अवेलेबल होता है अनअकैडमी पे। अनलिमिटेड क्विजेस जो है वो आप ले सकते हो, आप लॉन्च कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ले सकते हो, एडुकेटर्स के उसमें ले सकते हो, एंड आपको प्रैक्टिस करने के लिए वीकली, फोर्टनाइटली और डेली बेसिस पे आपको मिलता है, प्लस एवरी संडे आपको नेशनल लेवल मॉक टेस्ट मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, यू ऑल्सो हैव अ स्पेशल क्लास फीचर, जहाँ पे आप फ्री स्पेशल क्लासेस कर सकते हो अनअकैडमी पोर्टल पे। आप लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, इंटरैक्टिव क्लासेस होती है, पोल्स होती है, आप हैंड रेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। एंड इफ़ यू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, जहाँ की मेरा प्रोफाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो आप, मैं जब भी कोई स्पेशल क्लास अरेंज करूँगा, आपको यू विल नेवर मिस एन अपडेट अबाउट दैट, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम दैट ऑन योर अनअकैडमी ऐप। Every morning 8 o'clock, generally speaking, I take reading comprehension की classes, special free special classes में, तो आप वहाँ पे आके RC जो है मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं, हमको जो आज हमको सबसे पहले पढ़ना है। The first important event that happened in October was that the Indian Navy organized an offshore sailing regatta from Kochi to Goa as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration. The idea was to boost the spirit of adventure and ocean sailing among the Navy personnels. And ये जो है वो Indian Naval Sailing Association के अंडर, उनके अम्ब्रेला के अंडर किया गया था, which saw the participation of 6 vessels, 6 Indian Navy vessels, जहाँ पे कि 40 footers and 256 footers vessels जो है उन्होंने पार्ट लिया था इस रिगाटा में। इट्स सेलिंग फेस्टिवल में। रिगाटा इज नथिंग बट अ फेस्टिवल काइंड ऑफ थिंग। They covered a total distance of 360 nautical miles कोची टू गोवा ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट था। ड्रामा फिल्म कुजहंगल इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बनी ऑस्कर्स 2022 के लिए। ये तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है, जिसको इंटरनेशनली ट्रांसलेट किया गया इनटू पेबल्स। ये इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है फॉर द 94th अकेडमी अवार्ड्स, जो कि अकेडमी अवार्ड्स ही ऑस्कर्स का एक्चुअल नाम है। सो दिस इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2022. This film is directed by Vinod Raj PS and has been produced by Vijnesh Shivan and Nayanthara. 94th Academy Awards जो हैं वो मार्च 2022 27 मार्च 2022 में लॉस एंजलिस में अनाउंस किए जाएंगे विनर्स। तो ये क्योंकि 2022 में ये मार्च 2022 वुड बी क्लोजर टू द एग्जामिनेशन, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ये हर साल एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्कर्स एंड अकेडमी अवार्ड्स एवरी ईयर is very important for all competitive entrance examination. So India's official entry to Oscars is Kuzhangal, जिसका international translation is Pebbles. Election Commission of India ने launch किया गरुड़ा ऐप।
ये डिजिटल मैपिंग है सारे पोलिंग स्टेशंस को मैप करने के लिए, जिससे कि फास्टर, स्मार्टर और ट्रांसपेरेंट कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन वर्क किया जाएगा. राइट. सो थ्रू द गरुड़ा ऐप ऑल दीज बूथ लेवल ऑफिसर, जिनको BLO कहते हैं, वो फोटोज अपलोड करेंगे, लोकेशन इन्फॉर्मेशन डालेंगे, पोलिंग स्टेशंस का डेटा डालेंगे, लाइक जोग्राफिकल डेटा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द सेंटर, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से. और ये ऐप के कारण जो पेपर वर्क है वो भी रिड्यूस होगा और एफिशिएंट तरीके से, काफ़ी फास्ट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली मैनर में इलेक्शन के सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे. अदनान, मैं तुम्हारा समझ नहीं पाया यार. लाइक व्हाट इज योर क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज योर कंफ्यूजन? बट खैर, एनीवे, या सो ये है गरुड़ा ऐप विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. राइट. ओके. दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, 947 से अभी तक 74 ईयर्स हुआ मैथमेटिकली, बट हाउ 75 ईयर्स? वाई आर वी सेलिब्रेटिंग 75th? तो 75th ईयर सेलिब्रेट करेंगे ना. 74 ईयर्स तो कंप्लीट हो गया, तो अब तो 75th ईयर सेलिब्रेट करेंगे ना. मतलब 74th क्यों सेलिब्रेट करेंगे? 74 तो कंप्लीट हो गया. 47 to 48, 48 to 49, 49 to 50, 3 साल इधर, 2021 एक 4 साल और प्लस 70 ईयर्स, 74 ईयर्स कंप्लीट हो गए. तो अब 15th, मतलब अब अगर तुम अगस्त 2021 से देखोगे तो अब तो 75th ईयर लग गया ना. तो दिस इज आवर 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. मतलब कंफ्यूजन क्या है, मेरे को वो नहीं समझ में आया. 74 ईयर्स कंप्लीट हुआ और 75th ईयर शुरू हो गया. सो वी विल, व्हाट विल वी सेलिब्रेट? विल सेलिब्रेट कि अब 75th ईयर चल रहा है ना हमारे इंडिपेंडेंस का. लाइक, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं, अच्छा, मैं भी समझा तुम मैथमेटिकली कैसे तुम क्या कह रहे हो, बट आर यू गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग? ओके. सो सिंस अदनान अभी कुछ लिख नहीं रहा है, तो विल जस्ट वेट. बट एनीवे, सो कमिंग टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, 51st, हाँ, 75th होने की खुशी है, मतलब कि हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा 75th ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. ठीक है. सो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, एट द 67th नेशनल, उर्वशी क्या नहीं समझ में आ रहा है यार? मतलब बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर थोड़ा सा रीअलाइन करूं खुद को. स्क्रीन नहीं दिख रही.
तो स्क्रीन मत देखो ना, स्क्रीन छोड़ दो, तुम खाली सुनो मेरे को। जो काम की चीज है वो तो मैं बोल ही रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा करो, आंख बंद करो, बस सोना मत। आ, सो नहीं जाना। आंख बंद करो, ईयरफोन लगाओ और सुनो बस मेरे को। ठीक है। ऐसे भी मतलब लोग यही कहते हैं कि टचवुड मेरी आवाज ठीक है, दिखने में कुछ खास ऐसा मतलब देखने लायक कुछ है नहीं, है ना। ठीक है, तो सुनो। तो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया, और ये हुआ आपके नेशनल फिल्म अवार्ड्स सेरेमनी में। और इस साल ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स 67th एडिशन था। तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो रजनीकांत जी जो है, जो कि साउथ इंडिया के बड़े ही सुपर मेगा स्टार है, उनको अवार्ड किया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर. He was awarded this, he received this award from the Vice President of India, Mr. M. Venkaiah Naidu. Okay? Now, this award was instituted in 1969 and is the highest honor for an artist in Indian cinema. The Dada Saheb Phalke Award जो है वो highest honor है for any artist in Indian film cinema. This was decided by a jury जो उसमें की 5 members होते हैं, जिसमें आशा भोसले जी थी, डायरेक्टर सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन एंड एक्टर विश्वजीत चैटर्जी थे. द दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर 2019 was to be announced last year, but वो कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया, एज वर द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2019. ठीक है, राइट. सो रजनीकांत हैज बिन, एक्टर रजनीकांत साहब जो है हैज बिन ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड्स. 56th National Cross Country Championship will be hosted by Nagaland, and this is scheduled to be held in Kohima, which is in Nagaland, on 15th of January 2022. It will also be clubbed with the South Asian Federation Cross Country Championship, और ये first ever national athletics event होगा which will be hosted by Nagaland. So all the top athletes from 8 South Asian countries are going to take part in this day-long international sports event. This will comprise of running on different terrain, including dirt, jog downhill, and mountain uphill. So cross country is like बहुत लंबी रेस होती है जहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टेरेन्स को के बीच में दौड़ना होता है, भागना होता है और कंप्लीट करना होता है. ठीक है, तो दिस इज द 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, which is clubbed with the South Asian Federation Cross Country Championship. ये दोनों को क्लब कर दिया गया है. is going to be hosted by Nagaland. CLAT में कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे क्या? आई डाउट यार. कोविड-19 अब ना बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया है. So until unless something very major comes up, COVID-19 is not going to be a issue of asking questions. लास्ट ईयर नहीं पूछा था कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो इस बार पूछना तो और ज़्यादा ही वो हो गया है. ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको इंटरनेशनल अफेयर्स से इंडिया का रिलेशन विद चाइना, इंडिया का रिलेशन विद अफगानिस्तान, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते रहेंगे. सो हम लोग जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम डेफिनेटली डिस्कस करते ही रहते हैं हमारे करंट अफेयर्स के क्लासेस में, राइट. सो वंस वी कीप डूइंग इट आप जो है उसको आराम से रिवाइज करते रहना, तो आपको याद रहेगा. रिविजन इज द की फॉर करंट अफेयर्स. ओके, सो DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट कॉल्ड अभ्यास. ठीक है, तो डिफेंस, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने की हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको कि इसका शॉर्ट एक्रोनिम हीट है और इसका पूरा नाम अभ्यास है. उड़ीसा में जो इनका रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया और देखा कि ये हमारा सही बैठ गया. जो हमारा what we have created is working perfectly fine. This target aircraft is equipped with MEMS based inertial navigation system
जो कि नेविगेशन करके आपको एकदम पिन पॉइंटेड रेंज पे जाके हिट करता है फॉर गाइडेंस एंड कंट्रोल. This has been Abhyas has been designed as well as developed by DRDO Laboratory, Aeronautical Development Establishment in Bengaluru for the Indian Armed Forces. The air vehicle Abhyas can be used as an aerial target. Aerial target की तरह इसको use किया जा सकता है for various missile systems. और this is fully autonomous flight. ये खुद से चल सकता है and और ये लैपटॉप बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसको ऑपरेट किया जा सकता है इस एयर व्हीकल को, जो कि डीआरडीओ ने डेवलप भी किया है, डिज़ाइन भी किया है. और इसका सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो हो गया फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा. Right. 24th October is celebrated every year as International Day of Diplomats. ओके, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड. अदनान, तुमने जो बोला है ना कि एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ, तो ठीक है. ऑफ कोर्स नॉट इन दिस क्लास, क्योंकि अभी हमारे पास खुद ही करने को बहुत कुछ है आज के क्लास में. बट गिव मी सम टाइम, लेट मी एक्चुअली वर्क ऑन दैट पीपीटी फ्रॉम अ कंप्लीट स्क्रैच. और एक पीपीटी बनाता हूँ जिसमें मैं ये सारे वेरियस स्कीम्स जो हैं वो ऐड कर देता हूँ. ठीक है, एक पीपीटी बना के मैं वो एक क्लास ले लूँगा. ठीक है. So you can, so whenever I schedule that class, you can always come and attend it. Good evening Priya. Hi, good evening everyone. ठीक है. तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पे तुम देखते रहना, मेरा स्केड्यूल तुमको दिखते रहेगा. जब भी वैसा आएगा तो अटेंड कर लेना क्लास. ठीक है. ओके, 24th October every year, International Day of Diplomats. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. क्लैट 2023 के लिए भी है इम्पोर्टेंट, क्योंकि दिसंबर 2022 में तो है ही क्लैट 2023. तो बिल्कुल धनराज ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. टेलीग्राम चैनल नेम वैभव प्रकाश अनअकैडमी लॉ. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुमको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम देयर. ठीक है. अदरवाइज द नेम इज वैभव प्रकाश अनअकैडमी लॉ. ओके, सो 24th October एवरी ईयर जो है हम इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमैट्स सेलिब्रेट करते हैं. ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट वी रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन जो कि डिप्लोमैट्स ने किया है टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, टू शेप अप दिस होल वर्ल्ड एज टू वेयर वी लिव इन टुडे. एंड it is also to bridge the gap with respect to the perception that common people have and the reality of what diplomats go through with respect to what we perceive as. So the first International Day of Diplomats, ये static GK का बता रहा हूँ, was celebrated in Brasilia on 24th October in 2017. And ये Indian poet and diplomat अभय के ने propose किया था इस दिन को. And this saw participation of diplomats from Bangladesh, France, Ghana, Israel, Italy, Mexico, South Africa and Turkey. Again, so 24th October, International Day of Diplomats. Diplomats are those people who represent a country, who represent their home country in some foreign country. So वो लोग diplomats होते हैं. So FIFA ranking 2021 जो है वो रिलीज हो गई है और इंडिया का रैंक 106th है. So FIFA is Federation International Day Football Association, which is the World Football Association for the whole of world. And Indian team का position has increased to one spot after the victory in South Asian Football Federation Championship 2021. उसके बाद इंडिया ने एक पोजीशन जो है वो अपना बेटर किया है and we are now sitting at 106th position. We defeated Nepal in the summit clash in the SAF
चैम्पियनशिप। एंड बेल्जियम जो है फीफा के रैंकिंग्स में, बेल्जियम फर्स्ट पोजीशन पे है, ब्राज़ील सेकंड पोजीशन पे है और फ्रांस जो है वो थर्ड पोजीशन पे है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फीफा रैंकिंग्स। एंड ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडिडास दीपिका पादुकोण को चूज किया गया है एंड फॉर विमेन स्पोर्ट्स, एंड शी विल रिप्रेजेंट एडिडास विमेन ग्लोबली। और फीमेल ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ एडिडास की अगर बात करें इन इंडिया, तो इट इंक्लूड्स मीराबाई चानू, बॉक्सर लोवलीना बोरगोहेन, निखात जरीन एंड सिमरनजीत कौर, स्प्रिंटर हिमा दास एंड स्क्वॉश प्लेयर दीपिका पलिकल। तो ये सभी लोग जो है वो एडिडास इंडिया के फीमेल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। अब इसमें एक और नाम जो है वो ऐड हो गया है ऑफ एक्टर दीपिका पादुकोण, जिनको कि एडिडास ने एज देयर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है। शी इज नॉट गोइंग टू represent Adidas India, she is going to represent Adidas globally. Writing for My Life, anthology of Ruskin Bond has been released. And it contains some of the most exemplary, most interesting stories, essays, poems, and memories of Ruskin Bond. This has been released 25 years after the first anthology of Bond titled The Best of Ruskin Bond was released. The selections for this anthology has been made by Ruskin Bond himself and his editor Prem Manka Goswami. And I'm sure all of you have heard and know about Ruskin Bond, who's an Indian author of British descent, and his first novel was The Room on the Roof. And an anthology, ये question होगा कि भाई anthology क्या होती है? So it is nothing but a collection of all the literary works which is chosen by a compiler. एक person जो compile करता है, वो जो choose करता है literary work, उसको anthology कहते हैं. It could be a collection of plays, poems, short stories, songs, certain excerpts, कुछ part of the stories या कुछ part of his writing, सब कुछ को मिला के जो बनती है वो एक compilation होता है, उसको anthology कहते हैं. तो सबसे पहला रस्किन बॉन्ड का एंथोलॉजी 25 साल पहले बना था, जिसका नाम था द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, और उसके बाद अभी बना है आफ्टर 25 इयर्स, जिसका की टाइटल है राइटिंग फॉर माई लाइफ. ओके, मूविंग ऑन. Shijian 21 is a satellite that has been successfully launched by China. This is going to be used to test and verify space debris मिटिगेशन टेक्नोलॉजी की. जो स्पेस में जो वेस्ट चला जाता है ना, जो हम सैटेलाइट्स भेजते हैं, रॉकेट्स जाते हैं, तो वहाँ पे वहाँ पे स्पेस में कई सारे जो डेब्री होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको कैसे मिटिगेट करना है, उसके टेक्नोलॉजी के बेस पे एक सैटेलाइट है Shijian 21, जो कि चाइना ने लॉन्च किया है. दिस वॉज लॉन्च फ्रॉम द Shizhang Satellite Launch Center in Sichuan province on a Long March 3B carrier rocket by China, and this is mainly going to be used to test and verify the space debris mitigation technology. That is what is the purpose of launching this whole satellite, which China has successfully done. South Korea ने flight test किया first homegrown space rocket called Nuri. ठीक है, तो ये नूरी, ये नाम जो है ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा, याद रहना चाहिए. और ये साउथ कोरिया का फर्स्ट होम ग्रोन स्पेस रॉकेट है, जिसको कि सक्सेसफुली इंडिजिनसली डेवलप, अपने घर में डेवलप किया था साउथ कोरिया ने. एंड सो इट वाज बिल्ट ऑन एन आइलैंड नियरली 300 miles साउथ ऑफ सियोल. इट्स नूरी इज अ रॉकेट ऑफ 47.2 meters लॉन्ग एंड 200 tons का, इट्स अ ह्यूज रॉकेट. एंड द 3-stage रॉकेट जो है वो फिट किया गया था इनटू 6 fueled engines एंड 2 trillion, अगर आप डॉलर्स की बात में करो, US डॉलर्स में समझें, तो वॉन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया. 1.6 billion US डॉलर्स में इसको बनाया गया था नूरी रॉकेट को, जो कि सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च कर दिया गया है. 24th October is also celebrated annually as the World Polio Day, and the idea is to raise awareness about polio vaccination and eradication of polio. ये डे जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ जोनस सॉक. ये इम्पॉर्टेंट नाम है. जोनस सॉक का
के बर्थ को कमोमरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है. वाई? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट, लाइक ही वॉज वन हु led the first team to develop a vaccine against polio. ठीक है. The theme for 2021 for World Polio Day is delivering on a promise. ये theme important है. और polio is a crippling and fatal infectious disease जहाँ पे आप जानते हो there is no cure for it. But इसके vaccines जो होते हैं वो effective होते हैं, बहुत safe होते हैं. And polio जो है वो बच्चों के बच्चों को जब दिया जाता है तो they are always so that vaccine actually helps them and protects and prevents them from contracting polio. Okay. This vaccine is given multiple times, which always protects the child for his life. And the strategy is definitely to eradicate polio by immunizing and providing that vaccine to every child. So till the time that world is polio free. 24th October is also a day for World Development Information Day. Guys, I'm very sorry. Just give me 1 minute. There's someone at the door. Just 1 minute and I'll be back. I'm very sorry. Hi, I'm so sorry. Yeah, so we were discussing about 24th October being World Development Information Day, right? So United Nations celebrate करता है इस day को to draw the attention of the world public opinion towards development of problems and the need to strengthen international cooperation and how can we solve this whole issue of growth and development. So जहाँ पे कि आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बारे में, पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप अप करेंगे, इनके बारे में बात की जाती है. एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1972 to coincide with the United Nations Day, because 24th of October is also the foundation day of the United Nations. ठीक है. क्या लाइव वीडियो में भी ऐड चल रहा है? बट वो ऐड तो एल्गोरिथम के बेसिस पे होता है. उसका कोई मतलब बेसिकली एज टू व्हाट यू हैव बीन सर्चिंग ऑन यूट्यूब, उसके बेसिस पे ऐड एल्गोरिथम वर्क करता है यूट्यूब का. बट आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द irony here. And I can just pass on a smile. है ना. चलो. Ramnath Krishnan has been appointed as the managing director and group CEO of ICRA. So yeah, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने का नहीं है. दिस इज जस्ट लाइक वन लाइनर इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो. हाँ, मतलब ICRA is nothing but a rating agency which is owned by the Moody's Corporation. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है Moody's Corporation, उनका रेटिंग एजेंसी है. और उनके नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो है वो बने हैं रामनाथ कृष्णन. एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड एन शिवरामन, जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था विद इमीडिएट इफेक्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस. सो रामनाथ कृष्णन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ एन MD ऑफ ICRA. 24th October, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, is the United Nations Day, the Foundation Day. So every year 24th October is celebrated since 1948. It was in 1945 that the Charter of United Nations came into force, right? And with the ratification of this UN Charter by the majority of the signatories, including 5 permanent members of the Security Council, UN officially came into being. So 2021 अगर देखें तो it marks the 76th anniversary of the United Nations and its founding charter, क्योंकि 1945 से मना रहे हैं. And this charter was signed on 26th June of 1945
by some 50 countries. Poland, which was not represented at the conference, signed it later and became one of the original 51 member states of United Nations. 24th October 1945 को officially UN came into existence after the agreement was signed on 26 June. 24th October 1945 को officially it came into existence. जब this agreement was this convention was officially ratified by China, France, Soviet Union, UK, US, and by other original signatories. और इंडिया भी one of the original signatories है to the United Nations Charter. And the term or the name United Nations was coined by the US President Franklin D. Roosevelt, and the first used in the Declaration of UN Nations on 1st January 1942 during the Second World War. ये नाम जो है वो पहली बार यूज़ किया गया था. यूनाइटेड मतलब बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर बात करो तो एक प्लस अनअकैडमी प्लस पे मेरी क्लास जो है चल रही है, कोर्स चल रहा है, सैटरडेज को होती है. सो यू कैन अटेंड दैट इफ़ यू लाइक. तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, तो रिकॉर्डिंग्स आप डेफिनेटली जो है वो उसके देख ही सकते हो. ठीक है. ओके. So Uttar Pradesh government has renamed Faizabad station as Ayodhya Cant. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने का सच है नहीं, बट ये is a current affairs one liner question जो पूछा जा सकता है. और so कई सारे नेम जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में काफ़ी नेम्स चेंज किए जा रहे हैं. अलाहाबाद became प्रयागराज. Now Faizabad has been renamed as Ayodhya Cant. है ना. तो कई सारे नेम जो है वो चेंज हो रहे हैं. एंड so this could actually be like also like for example Mughal Sarai railway station जो है which falls under or which is near to Varanasi, so that was also renamed as Pandit Deen Dayal Upadhyay Junction. So this way a lot of names of places are being changed by the Uttar Pradesh government, जिसमें कि फैज़ाबाद जो है recent development है. World's biggest cricket bat has been unveiled by the Hyderabad Cricket Association. And the president, Hyderabad Cricket Association के president and former India captain Mohammad Azharuddin ने unveil किया, now which has also been certified by the Guinness World Book of Records to be the biggest cricket bat, which has been designed by Pernod Ricard India Private Limited on Tank Band. So that's a place जहाँ पे उसको बनाया गया है. So this bat measures 56.10 feet and it weighs 9 ton and is made of poplar wood. And this was to convey best wishes to the Indian cricket team and bring back the T20 World Cup in Dubai. But unfortunately, we could not go to the semi-finals in the T20 World Cup. We lost, we came out. But then again, at least we have a Guinness World Book Records to our name of the world's biggest cricket bat. Disarmament Week of 2021 ये जो है ये important है. ये annually observe किया जाता है to promote awareness and understanding of the issues of disarmament सभी देशों के बीच में. Disarmament is basically आप अपने arms and ammunitions को कम करते हो, so that the overall threat to the world security comes down. So the idea अभी आज के डेट में हम सभी कंट्रीज के पास इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपनरीज है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं कि अगर कभी फुल फ्लेजेड वॉर हो गया तो अर्थ ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, इट विल कम टू एन एंड. So this third world war if happens and everyone comes out with their own set of might, Earth is not going to survive. So the idea of the Disarmament Week to celebrate and observe the Disarmament Week is to promote, global peace maintain किया जा सके. सभी लोग अपने धीरे धीरे सब लोग अपने arms and ammunitions को जो है वो कम करें, so that वर्ल्ड पीस जो है वो बना रहे. सबके बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए. सो स्टार्टिंग 24th of October, द एनिवर्सरी ऑफ UN फाउंडेशन डे, द वीक लॉन्ग एनुअल ऑब्जर्वेशन हैपेंस, जहाँ पे कि एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनाया था जनरल असेंबली ने 1978 में
on disarmament. ठीक है? So yeah, so this is actually what is about the disarmament week, जो 24th October से लेके 30th of October तक मनाया जाता है. So this is the aim to reduce the use of weapons, specifically nuclear weapons, to bring peace in the world and society. That's the whole objective of the disarmament week. And basically this will also be like कि mutual trust जो है वो बना रहे सभी कंट्रीज के बीच में. अगर यूएस कम कर रहा है, चाइना कम कर रहा है, रशिया कम कर रहा है, इंडिया कम कर रहा है, ब्रिटेन कम कर रहा है, इटली कम कर रही है, सो इफ ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग देयर लाइक वेपन्स, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर वेपन्स, तो एवरीवन विल लाइक हैव ट्रस्ट कि हाँ चलो ठीक है, मतलब. बट ऐसा कुछ ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी में हो रहा नहीं है. Iran is also making, Pakistan is also getting, everyone is making nuclear weapons. No one is actually doing anything in reality. But yes, we do observe Disarmament Week from 24th October to 30th October. India's largest small finance bank, which is AU Small Finance Bank, has launched a quick response code, QR code, Soundbox, to boost the digital payments while making its first bank to launch such a product. And it will help small merchants to run their operations very smoothly without any hassles of reading SMS every time आप payment करते हो. And ये 5 languages में दिया जा रहा है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती और मराठी. So it's a small finance bank. मतलब ऐसा नहीं, ऐसा भी बड़े पेटीएम्स, पेमेंट बैंक्स आप देखोगे या जितने भी बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं उन लोग के पास ऑलरेडी है ये सब. इट्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि अपने सेक्टर में इट बिकेम द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च सच अ प्रोडक्ट, जहाँ पे कि QR साउंड बॉक्स है, आप स्कैन करते हो, क्विक रिस्पॉन्स स्कैन करते हो, पेमेंट करते हो और वो आपको बोल के बता देता है कि दिस मनी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड. आई एम श्योर तुम लोगों ने देखा होगा किसी ना किसी दुकान में. Prime Minister Narendra Modi launched 5,000 crore Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission on 25th of October from his parliamentary constituency Varanasi in Uttar Pradesh, where I come from. And this is one of the largest pan-India schemes for strengthening healthcare infrastructure across the country, and is in addition to the National Health Protection Mission, which is Ayushman Bharat Yojana. So ये health infrastructure को increase करने के लिए, better करने के लिए 5,000 crores जो है वो invest किए जाएंगे. It will also address public health infrastructure में जो gaps हैं of providing primary care, urban and rural sector दोनों में, जहाँ पे कि जो first response होता है वो उसको strengthen करना है. And it will help us fight epidemics or diseases in the future, जो हमने अभी देखा कि India was not very well prepared for a pandemic like COVID. So the idea is कि future में हम लोग ऐसा face न करें. So under this scheme, 17,788 rural health and wellness centers in 10 high focus states will get support, and 11,024 urban health wellness centers will be established in all of the states in the urban region under this Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. India, UK and Australia has jointly launched IRIS initiative at COP26. Conference of Parties on the sidelines of Conference of Parties 26 meeting में India, UK and Australia ने एक small island developing states has planned to launch a new initiative called as Infrastructure for Resilient Island States, IRIS. The IRIS platform aims at creating infrastructure that can withstand disasters और economic losses in island nations को reduce कर सकता है. ठीक है? So this will be launched with initial funding of 10 million from Australia, India and UK. And ये United Nations Climate Change Conference जो कि COP26 हुआ था, October 31st से November 12 तक जो चला है, उसी के साइडलाइंस पे इंडिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है आइरिस इनिशिएटिव. डॉक्टर राजीव निगम was selected for 2022 Joseph A. Cushman Award. ठीक है? So this is So he's the former chief scientist at CSIR National Institute of Oceanography, and he has been selected for this Cushman Award for excellence in foraminiferal research. And he's the first Indian citizen to be selected for the prestigious award. And
he has been selected for his outstanding lifetime contribution to the field of microfossil research. Okay. And this Joseph A. Cushman Award was established by USA-based Cushman Foundation for foraminiferal research, मतलब microfossil research in 1979. Ahmedabad and Lucknow are the two new teams of the Indian Premier League. ये दो नई टीम्स जो है वो ऐड कर दी गई है. Sanjeev Goenka Group, RP Sanjeev Goenka Group is the owner of the Lucknow team, while CVC Capital Partners is the owner of the Ahmedabad team. हाँ मतलब इसके उतना डिटेल में कुछ ऐसा है नहीं. So the 15th season will see 10 teams competing for the IPL title. जो अभी तक 8 थी अब वो 10 teams हो जाएंगी for IPL, and this only goes on to show that IPL is getting bigger and better नहीं पता but bigger तो हो रहा है. ICICI Bank surpassed Hindustan Unilever to occupy the 5th spot in market capital. So according to BSE data, Bombay Stock Exchange, ICICI Bank's market capitalization जो है वो 5.83 lakh crore पे end किया, just above Hindustan Unilever's 5.76 lakh crore पे. So this has taken ICICI Bank to the 5th spot. India's first test tube bunny buffalo calf was born in Gujarat. In vitro fertilization techniques से जो first breed of buffaloes है जिसका नाम बन्नी रखा गया was born in Gujarat, Kutch region में, and the process was done to enhance genetically superior buffaloes to increase the milk production. Bunny buffalo is known for its resilience and higher milk producing capacity in arid environment जहाँ पे dryness होती है वहाँ पे. And this breed had achieved 6 pregnancies from 18 recipient buffaloes at this farmer's farm, and yeah, basically yes, India has more than 109 million buffaloes. That are like 56% of world's buffaloes population. India has like 56% of world's buffalo population in our country. India's first state wildlife DNA testing analysis lab was inaugurated in Nagpur, and the Chief Minister of Maharashtra, Mr. Uddhav Thackeray, inaugurated this state wildlife DNA testing analysis laboratory in Nagpur. And he also launched 3 fast-track DNA testing units in Mumbai and Pune under the Nirbhaya scheme. And 2 wildlife DNA testing laboratories at Dehradun and Hyderabad are already there, which are fully owned by the central government. So this is like for the first time that a state government is doing it, right? So this is the state wildlife DNA testing analysis. The idea of this lab is to deal with cases which are registered under Protection of Children from Sexual Offences Act, and these labs were developed at a cost of 53 crores under the central government Nirbhaya scheme. Okay. Niti Aayog has launched innovations for you Digibook. And Atal Innovation Mission of Niti Aayog has launched a digital book called Innovations for You. And the focus of this digital of this Digibook is on healthcare. And this is an initiative, like I said, is of Niti Aayog to share the successes of Atal Innovation Mission startup in different domains. And it has been like, since we are celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav, तो इसलिए Digibook जो है launch किया गया है. It's a compilation of 45 health tech startups and how they were incubated at the Atal Incubation Center across the country, and how are they using technologies like artificial intelligence and everything to find out solutions to health issues like child care, mental health, dental care, anemia, and monitoring human vitals. ये सबको check करने के लिए how are these startups working and how are they functioning, इन सबका compilation है इस Digibook में जिसका नाम है Innovations for You.
Invest India has been elected as the president of Geneva-based WIPA. So Invest India is a young startup within the government of India, जिसको कि unanimously elect किया गया as the president of World Association of Investment Promotion Agencies for 2021 to 2023. इन्वेस्ट इंडिया एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, फैसिलिटेशन एजेंसी है टू हेल्प इन्वेस्टर्स लुक फॉर सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस इन इंडिया. सो प्रेसिडेंट इन्वेस्ट इंडिया है, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स इजिप्ट एंड स्विट्जरलैंड है और 9 रीजनल डायरेक्टर्स हैं विच आर ब्राज़ील, साउथ कोरिया, फिनलैंड, कुवैत, कोस्टा रिका, साइप्रस, अजरबैजान, घाना एंड समोआ. यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री 2021 रेडबुल के मैक्स वेस्टरैपन ने जीता था और ये 2021 के जितने भी रेसेस हुए हैं, F1 रेसेस, फार्मूला 1 रेसेस जो हैं, वो मतलब किसने जीता है वो इसमें दिया हुआ है इस स्लाइड में. ये ईच एंड लाइक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि फ्रेंच ग्रांड प्री जो है वो किसने जीता था, बट हाँ, व्हाट यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर ऑफ is that Max Verstappen जो है वो इस पूरे सीजन को जीते, which had 17 rounds, ठीक है, for the whole of the entire year it had 17 races, जिसको कि फाइनली टॉप पोजीशन जो है वो मैक्स वर्स्टैपन फ्रॉम रेड बुल को मिला. और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे रहे वो मर्सिडीज़ के लिए जो ड्राइव करते हैं मिस्टर लेविस हैमिल्टन, ही वाज देयर. And again, Red Bull Racing के Sergio Perez came third in the overall list, like in the overall rankings after the end of 17 races of the season. Indo-Pacific Regional Dialogue जो है वो commence हुआ. It's a 3-day online event जो कि 27 to 29 अक्टूबर में चला. इट्स इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, IPRD भी बोलते हैं, जिसका थीम है इवोल्यूशन इन मैरिटाइम स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द 21st centuries एंड द चैलेंजेस एंड वे अहेड क्या है. दिस वाज द थीम ऑन विच इट वाज फोकस्ड. द नेशनल मैरिटाइम फाउंडेशन जो है इज इंडियन नेवीज नॉलेज पार्टनर एंड ये इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है ऑफ द इंडियन नेवी जो कि फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया था 2018 में, और ये रिव्यू करती है अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज चैलेंजेस को जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में अराइज कर सकती है या करती है, उसको एड्रेस करने के लिए. इंडो कैनेडियन अनीता आनंद हैज बीन अपॉइंटेड एज कैनेडाज डिफेंस मिनिस्टर. तो ये अगेन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस किया अपने नए कैबिनेट को, तो उसमें इंडो कैनेडियन जो है अनीता आनंद, उनको कनाडा का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया गया. एंड okay, so she is going to be the first woman to serve as defense minister since Kim Campbell in the 1990s. 1990s के बाद she is going to be the first woman to serve as the defense minister in the for Canada. Flobiz Neobank has signed Manoj Bajpayee as the bank as the brand ambassador. Business को लो seriously campaign है जिसका कि the idea is to mark the importance of digital solutions. It's Flobiz is a neobank for Indian small to medium-sized businesses. So yeah, that's basically about it. Kotak Mahindra has tied up with Indigo to launch a Kaching credit card, जो कि Indigo के 6C rewards program के साथ link किया जाएगा, so that you can earn rewards by using the card on Indigo and other merchants. It will be available in 2 variants. बट हाँ, ये सब ना वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है. गो ग्रीन स्कीम जो है गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया है, और ये एक पोर्टल है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स टू कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द स्टेट, जिससे कि फ्यूल बिल्स जो है व्हीक्यूलर पोल्यूशन जो है वो कम होगा, फ्यूल बिल्स जो है वो कम आएगी. दिस इज द होल आइडिया. एंड दे विल बी गेटिंग अ सब्सिडी ऑफ 30% ऑन व्हीकल्स प्राइस और 30,000 विच एवर इज लेस. तो अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल लेबरर हो उस सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं गुजरात में, तो दे कैन परचेज बैटरी पावर 2 व्हीलर्स. एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 50% सब्सिडी मिल रही है या 30,000, या फिर बाकी इंडस्ट्रियल लेबरर को 30,000 या 30% का सब्सिडी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है.
Green Day Ahead Market has been launched by RK Singh, the Union Minister of Power and New and Renewable Energy. एक नया मार्केट सेगमेंट लॉन्च किया है उन्होंने जिसको कि कहते हैं ग्रीन डे अहेड मार्केट. ये इंडिया एज लाइक दिस मेक्स इंडिया द ओनली लार्ज इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट अ GDAM, like the Green Day Ahead Market for renewable energy, right? So the idea, so this opens up a renewable energy sector जिससे कि कोई भी सेटअप कर सकता है अपनी कैपेसिटी को. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो अपने रीन्यूएबल एनर्जी को बाय एंड सेल कर सकते हैं ओपन एक्सेस के थ्रू. और प्राइसेस जो हैं वो मार्केट बेस्ड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रहेंगे which will also allow the renewable generators to sell power at a competitive price. मतलब वो fixed नहीं किया जा रहा है and it will be more efficient energy economy that will be created because of this. India successfully test fired Agni 5 ballistic missile, ठीक है, and DRDO जो है वो successfully carry out किया अपना surface to surface ballistic missile on 27th of October from APJ Abdul Kalam Island in Odisha. It's a nuclear capable intercontinental ballistic missile which has क्या मैं समझा नहीं, मिडिल सा समझ नहीं आ रहा कुछ भी. लाइक सॉरी व्हाट, लाइक आई एम सॉरी, मेरे को नहीं समझ में आया कि क्या समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को. शुड वी ब्रेक आउट फॉर द डे, क्योंकि अभी थोड़ा सा और बाकी है एंड विल टेक सम टाइम. अगर इन्फो अच्छा, सीए अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है क्लैट 23 का, तो करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा, कार्यानंद पता है एक्चुअली इसके ऊपर ना एक बट वो बैच में लिया था मैंने क्लास. दिस वाज अ मतलब हाउ डू यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर करंट अफेयर्स इज समथिंग दैट आई एम टीचिंग इन अ क्लास 2023 के बैच में. वो अनअकैडमी प्लस के क्लास में होता है. तो वहाँ से ना तुमको समझ मतलब अगेन दैट्स द होल पॉइंट, राइट? लाइक एवरीथिंग यू विल नॉट बी गेटिंग हियर ऑन यूट्यूब. तो कुछ चीज़ें तुमको उसके लिए वहाँ जाना पड़ जाएगा. तो मतलब आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट अभी देखो जहाँ से मिडिल से भी स्टार्ट किया है 2023 के लिए, तो जहाँ अभी से ही स्टार्ट कर दो, नहीं तो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि तुमको दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम लिखना है. तो यू कैन हैव दैट. अच्छा, करण सिंह, आई एम अ प्लस स्टूडेंट. ओके, तो तुम्हारे बैच में नहीं हुआ क्या ऐसा? बैच में क्लास नहीं हुई? एक काम करना करण, मेरे को ना गेट इन टच विथ मी ओवर टेलीग्राम एंड आई विल हेल्प यू. ठीक है, गेट इन टच विथ मी ओवर टेलीग्राम. मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ. ठीक है. अच्छा, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट करें क्या, बिकॉज वी हैव रीच्ड 8, 1 घंटा हो गया है. ऑल्सो सेकेंडली द फैक्ट दैट अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी है एंड आई डोंट रियली वांट कि इंफॉर्मेशनल ओवरलोड हो जाए. तो व्हाट वी कैन डू इज़ विल जस्ट ब्रेक आउट फॉर द डे, और जो पेंडिंग है ना वो मैं कुछ दिन के बाद करा दूंगा.
चलेगा? Does that work? I think let's do that because अभी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा and we have a lot actually to cover and I don't want to be doing it कि तुम लोग के लिए information overload हो जाए. ठीक है? So on that note, criminal law की कोर्स जो है वो Unacademy Plus पे चल रही है. So Plus के जो स्टूडेंट हैं वो तो एनरोल कर सकते हैं फॉर फ्री एंड ये 22 से स्टार्ट किया है. 2 क्लासेस हो चुकी है इसकी, आप उसके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो. और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू कैन टेक अ Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन यूज माई कोड VAI10 and you can get a 10% discount. Also, don't forget about the Saturday का Unacademy Law मॉक टेस्ट जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी, जो कि सैटरडे 27 को होने वाला है. उसको भी रजिस्टर करने के लिए, उसमें भी रजिस्टर करने के लिए यू कैन यूज द सेम कोड विच इज़ VAI10. ठीक है, इसको आप यूज़ कर लेना एंड यू कैन जस्ट रजिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट एज वेल. वो स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको कई सारे स्कॉलरशिप भी मिलेंगे और अगर आप रैंक 1 2 3 रैंक 1 to 10 में आते हैं तो आपके लिए अमेजन वाउचर्स भी हैं. ठीक है? So on that note, don't forget to subscribe to Unacademy Law. Do like and share the video. Click on the bell icon so that every time I come live or a session goes live, you'll be notified about the same. And we'll meet again soon tomorrow. You can come for my reading comprehension classes in the morning at 8 a.m. 8 a.m. RC की क्लास होती है. ये स्पेशल क्लास है और ये Unacademy के पोर्टल पे होती है. यूट्यूब पे नहीं होती है, ये Unacademy पोर्टल पे होती है. सो यू कैन कम जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको स्केड्यूल जो है वो मिल जाएगा. ठीक है? ऑन दैट नोट आई वुड से थैंक यू फॉर द डे and we'll meet again tomorrow. Till then, stay safe, take care, have fun, and if in case you find some difficulty, don't forget to get in touch with me over Telegram. Till then, this is Vaibhav Prakash signing off. Bye bye.